Hi guys. Hi. Okay. So we'll start now. Fine. So interesting topic. It's a beautiful topic. A topic which is pretty much close to my heart, and so we're gonna talk about it. Now, I intend to do this in a couple of phases because it's not going to be really possible for me to kind of cover the entire investment banking. Let's say in 30-40 minutes. That's number one. Number two, when you talk about investment banking, it also requires a little bit of presentation, the PowerPoint presentation kind of thing. So I can walk you guys through the in-depth analysis of investment banking. Now, today I'm just going to give you an idea that how cool is investment banking, or what are good points about it, what are disadvantages of it. So we're going to talk about it so that at least those who are there, who knows investment banking, and people who are have no idea about investment banking, at least you get to know what exactly is investment banking. Also, how is the scope of investment banking in India, abroad, is something that I would love to cover because this is my domain and I really want you all to kind of know more about it. And it's always good to know about investment banking because there are a lot of finance enthusiasts there as students are concerned. So we're gonna talk about that. And once I'm done with my stuff, I would love to take your questions. So we'll go step by step. Okay, fine. Fine. So we'll talk about investment banking now. See, what is investment banking? First of all, the short form is iBank, and when in India, when we say iBank, a lot of people believe that ICICI Bank. So it's not ICICI Bank. iBank is basically investment banking. Now, investment banking does not mean that somebody has to take care of your investment or something like that. It's not like that. It's actually huge. It's very much vast. So I tell you my story. First time I got encountered with investment banking when I was doing my graduation from Symbiosis, Pune, and that's when I got to know about investment banking, that what sort of field it is. And from that point in time, I kind of got attracted towards investment banking. Now, yes, Mr. 1808, front, middle, back, all ends. We're gonna talk about that. Don't worry. I'll give you guys an idea. So yeah, that was the first time I got encountered with investment banking. Me getting attracted towards investment banking was not because of money or sort of lifestyle these guys have, but something that really fascinated me, and even today something that really fascinates me about investment banking is the kind of stress these guys handle, the kind of requirement of being sharp at your work, a sort of requirement of being always on your toes, and dealing with uncertainty. So it's a favorite tagline, expect the unexpected. So this is something I started liking more about investment banking. Then we got to know about that, yes, you being in an investment banking domain can make a lot of difference to your life. So every field, I would say, has its top-notch profiles. For example, for marketing, we have branding, right? For HR, we've got comp and pen, right? I mean, I believe so. Again, for operations, you have quality management, or maybe let's just say project manager sort of thing, right? In finance, you have an investment banking, right? Now, a lot of people get attracted towards investment banking because of their bonuses, their paychecks, all that stuff. But as an individual, I would say that that is something you will always be getting in a profile if you're really keen towards it, or if you're really passionate about it. So if you really want to do something in your life, you will make heck a lot of money, in that profile. And you will be seeing that a lot of people are not doing good in that profile, but you are doing damn good. So it's all about your passion. It's all about the way you like it or you love it. So as I told you, my thing was, I wanted to slog, I want to do something really extraordinary. Because when you come from a background, which is sort of, lower middle class sort of a background, and then, you have always seen that sort of a lifestyle, where you are always doing the stuff which is normal. Then at one moment in your life, you really want to jump for something. You really want to raise that bar. You want to challenge yourself that, what, fuck it, man, I'm going to do this. I'm going to take this as a challenge. I'm going to go for it. So let me see if I can do it or not. So started my career with Symbiosis, and that's how I kind of encountered with this. Now, I got more keen on it when I was actually working on Wall Street right after my graduation. I was working for a couple of clients over there, and then I actually saw investment banking world or culture by my naked eyes, and that's where I actually started falling in love with investment banking. So investment banking, when you talk about, there are plethora of options in investment bank. Predominantly when people talk about investment banking, they talk about mergers and acquisition,
they talk about IPO, they talk about trading, they talk about manipulation, they talk about 2008 crisis, they talk about Lehman Brothers, all that stuff, Goldman Sachs and all that stuff, right? But yeah, investment banking is more than that. So first thing, what requires to get into IB? Now, in India, if you talk about as far as IB is concerned, I don't know, I mean, a lot of people don't like it, but then it's a reality that, ABC, IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, KIL, FMS, all these B schools can actually give you an exposure towards investment banking main career. That's the front end, right? So what all things come in front end? So front end will always be talking about, getting your clients on board, making money for your company, because you are earning money for your company, you are into the revenue stream. You make hell lot of money for the company. So investment bankers are those people, those who actually make money. Now you might ask me कि सर एक बात बता दो, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो वाला और अपना जो नॉर्मल बैंक होता है कोटक हो गया, यस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उसमें फर्क क्या है? See, इसमें फर्क जो है वो ऐसा है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, टेक्निकली बात करेंगे तो आपको 20 फुट में ये पढ़ाया जाएगा, एक घिसी पिटी चीजें हैं, 20 फुट में आज भी ये पढ़ाई जाती है कि commercial bank is that sort of a bank who accepts money from people, that's called as deposit, and who lends money to people, which is called as loans, right? So one is the asset, one is the liability. So loans are the asset for a bank and the deposit is liability for a bank. So any bank or any sort of a bank who does all these sort of functions is called as commercial bank. But then investment banks are not supposed to take loans from people. They're not supposed to take money from people. That is number one, which investment bank is known for. That's number one. Number two, when you talk about investment banks are more risk prone. I mean, investment banks would love to take a lot of risk on their balance sheets, right? That's how investment banks are defined. Now, this is what I have been taught, or this is what you will be learning in your B school, but that's not the reality, right? Nowadays, if you look at or if you open up annual report of Goldman Sachs, you will see that Goldman Sachs is now accepting deposits from the H9s or from the high net worth individuals. So even now investment bankers are getting into it. So as I told you, right, I will be doing one session on investment banking, which will be kind of a PowerPoint presentation wherein I will be giving you in-depth knowledge about it. That will happen probably next week. Today we'll just talk about an idea of it. Okay. Now, so front end में अगर हम बात करेंगे, front end में बहुत सारी चीजें आती है, IPO होता है, trading होती है, all that stuff. Now, all these jobs are given to ABC का बच्चा लोग. It is always going to be IIT IIM or it is going to be SRCC IIM, SIMB IIM, or it's sort of BCom, then CA or CFA and then IIM, right? जो आज मैंने वीडियो डाली थी, ये वीडियो उसी के बारे में थी. That's the reason I always sort of promote and I sort of tell you guys that do this kind of things if you really want to get into investment bank. अब front end के बारे में अगर हम बात करेंगे तो front end is the cream of investment bank, where people make heck lot of money, right? I'll tell you, like, even if you're 21, 22 years old banda, the moment you get a job in investment bank, you can definitely afford a sort of, not a luxurious car I would say, but yeah, sort of you can afford a car which is in range between 20 to 25 lakhs. अभी तो उसमें Mercedes भी आ जाता है मेरे ख्याल से. So this is what you can afford to begin with, and this is what your salary range you would be seeing actually. So that starts from 20-25 goes to 70-80 lakhs also. Now in investment banking, if you talk about the front end role, which are based in USA, right? NY की बात करेंगे या फिर Wall Street के बारे में बात करेंगे. So all the front end role in USA, they basically start from 175 grand. So it's like 1,75,000 USD, right? That's the annual package. So if we talk about B school, so I and ABC folks can start with 50, 60, 70 lakhs. The highest begin finance is around about 70, 72 lakhs. कभी कभी 1 crore भी cross कर जाता है because of ESOPs and all that. Fine. So अगर आप वहाँ पे बात करेंगे, if we talk about your Harvard, Wharton and Stanford, the bare minimum that you can start with is around about 160 grand, like 1,60,000 USD. It can go till 2.5 lakh USD to begin with. So that's where you start in the front end. I'm just talking about front end. Front end का पहला designation होता है analyst. Some banks will call it as associate. ठीक है? तो पहला जो चीज है वो है आपका analyst. So you start with analyst, then you become associate, then you become VP and then you become MD. तो ये होता है investment banking का एक सबसे अच्छा चीज कि
your profiles or your hierarchy is quite flat. इंडिया जैसे वहां पे फंडा नहीं होता कि भाई मतलब जैसे कुछ कुछ बैंक्स होते हैं वहां पे, मैंने देखा है, मतलब नाम नहीं लूंगा, पर कुछ कुछ बैंक्स होते हैं वहां पे असिस्टेंट मैनेजर 1, असिस्टेंट मैनेजर 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2, सीनियर मैनेजर 1, सीनियर मैनेजर 2, फिर आपका आ गया डेप्यूटी मैनेजर 1, डेप्यूटी मैनेजर 2। यार अभी डेप्यूटी और सीनियर तो सेम ही है, बस आप लोग डेजिग्नेशन डाले जा रहे। जब तक आप सीईओ बनोगे तब तक आपको 18 डेजिग्नेशन क्रॉस करना पड़ेगा। सो दिस इज द इंडियन हायरार्की। फाइन, बाहर ऐसा नहीं होता। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अभी तक थोड़ा सा इन लोगों ने, मेरे ख्याल से इफ यू लुक एट द हायरार्की थोड़ा सा लेंथी है। सो यू विल बी हैविंग एनालिस्ट, देन यू विल बी हैविंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर उसमें इन्होंने डाल दिया एवीपी, यू नो, फिर सीनियर एवीपी, ऐसा करके फिर वीपी, सीनियर वीपी। तो हर एक इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिया में अलग अलग फंड है। बाय द वे, जब हम इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, आई एम कैटेगोरिकली टॉकिंग अबाउट गोल्डमैन सैक्स, डॉइचे बैंक, मॉर्गन स्टैनले, बोफा, क्रेडिट स्विस, मक्वेरी। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल these investment banks, JP Morgan Chase, right, Wells Fargo. I'm talking about all the international banks. In India, you might be surprised that in India, the investment bank as a sector or as a profile, right, or as a domain is pretty virgin. What I mean virgin is that, you know, इतना expansion अभी तक हुआ नहीं है, and we have very few banks in India, those who are functioning or they are actually taking care of investment banking का core function, and you can definitely calculate them, you know, on your fingers, right? So सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, so what comes in my mind is SBI. You have SBI. Then you have Kotak. Now Kotak has been known for a good investment banking function. So these guys have been doing a great job. Then you've got ICICI also. Now coming back to the global scenario, front end वाला people will make Shopify अच्छा खासा पैसा. This is like, I mean, this kind of information. But again, you have to be on toes. Definitely, I don't want to talk about what you guys have seen in Wolf of Wall Street. I know you will be keen to know that. But as a mentor, on my part, it will be really cheap if I, you know, kind of talk about those things. So I'm not going to talk about all these things. But yeah, when you look at the beautiful side, is definitely you have to work 14-15 hours a day. You have seen people in a week, right? A normal investment banker in a week would work round about, you know, 60 hours, like 50 to 60 hours, even more than that. USA का अगर हम average देखें तो it's around about 85 to 90 hours a week, right? So that's how it is. So that's the life that you kind of, you know, look out for. And yes, people say that investment bankers do not have life. Some of it's true because you have to work on Saturday and Sundays also. Again, depend करता है आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आप IPO में हो, अगर आप M&A में हो, इतना rigorous नहीं होगा. But if you are in trading, then you have that kind of a you know, schedule wherein you are like getting screwed every single day. Again, trading में भी बहुत सारा चीजें होती है। ट्रेडिंग में अगर मैं आपको बात करूं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट अगर मैं एक सिंपल वे में अगर आपको बात करूं, जार्गन को बाजू में रखे, तो जैसे मानो इंडिया में होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि यू नो, यू आर डूइंग दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑन द स्पॉट। इट्स अ वॉल्यूम बेस्ड, राइट, इट्स अ वॉल्यूम बेस्ड, बहुत ज्यादा फ्लो होता है शेयर्स का। People are buying, people are selling, there is insider news, people get the stuff, people are putting big money, you know, lakhs of rupees, millions, billions are at stake, something like that, right? So this is called as flow trading. This is called as flow trading, जहाँ पे sort of an intraday होता है, you guys are like, you know, killing it every day, right? Something like that. Then there is something called as positional trading, जहाँ पे you have a sort of easy going day, but not that easy going day. Fine. तो अगर हम बात करेंगे the field that I come from, this is called as structured trading, wherein you are hardcore working on derivative. चमका, so derivative मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे कैसे होता है, अगर हम फ्लो के बारे में बात करेंगे, डेली बाय सेल, डेरिवेटिव में ये नहीं होता है, right? The kind of field that I come from, structured, it happens, but the volume is not that huge. You have a job, like you work your ass off, no doubt about that. But the volume, when we talk about, we don't work in volume as far as the derivative folks are concerned. But जब मार्केट फटता है, in a very देसी लैंग्वेज, जब भाई कुछ फटता है, तब समझ लो मुझे क्या बोलना है, and then you are like out. Like we had days when, you know, I had a scenario wherein you know, there was a position that we had on one of the Greece bond, and you know, when the Greece was downgraded because they were about to get bankrupt and the things were like really fucked, we had to run to the office on our Bermudas. Trust me. So you can see those sort of days, right? So anyway, so this is what about trading, right? Front office, like
flashy and glamorous world, right? Then you come to middle office. Middle office is like beautiful place to work because whatever a trader is doing, so your trader is booking some trade, right? Your trader is valuing a particular sort of a security. So I tell you the kind of securities that we have dealt with called as credit default swap, right? Collateralized debt obligation, mortgage backed securities. ये सब jargon होगा आपके लिए, सब बाउंसर अभी जा रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, बट इसको मैं कुछ कर नहीं सकता. जिसको समझ रहा है, जो बच्चा समझा है यहाँ पे, तो पता होगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो यार जब ये हम जो भी एज ए ट्रेडर हम जो भी चीजें बुक करते हैं ना, तो हमको एकदम cynical way में देखा जाता है. Always like people will look at us in a very cynical way. They will be like, these guys are always there to do gafla, and these guys are always there to break the market and make money. It's not like that, to be very honest. So trader को always गालियां ही पड़ती है और trader को cynical way में देखा जाता है. तो मिडिल ऑफिस का बच्चा लोग ये काम करता है. मिडिल ऑफिस का people would do this. They check every single trade. They check every single trade that you book trader के साथ. तो यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल चीज काम होता है. हर एक चीज का माइन्यूट डिटेल्स में ना, क्या मान लो एक बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड एक सिक्योरिटी होती है, जैसे शेयर्स होते हैं, राइट? तो भाई इसने वैल्यूएशन क्या करा, इसने कुछ गफला तो नहीं करा, इसने कुछ चेंजेस तो नहीं करे वैल्यूएशन में. फिर 2008 में एक प्रॉब्लम हुआ था, जो क्राइसिस हुई थी, उसके बाद एक नया कायदा आया, एक नया लॉ आया, दैट्स कॉल्ड एज सार्बन्स-ऑक्सले, राइट? सम पीपल कॉल्ड एज सार्बनीज-ऑक्सले, थोड़ा फ्लैक्सी करके. इट्स कॉल्ड एज सार्बन्स-ऑक्सले. तो ऑडिटिंग भी चलता है, राइट? तो हर एक चीज मिडिल ऑफिस वाला देखता है. मिडिल ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है. अब ये जो जॉब्स है ना, वो इंडिया में भर भर के है, एंड इट्स गुड बिकॉज इन इंडिया दीज जॉब्स लाइक एनीथिंग. तो वहां पे एमबीए को भी काम मिलता है, सीएफएस आर वर्किंग, सीएस आर वर्किंग इन मिडिल ऑफिस. वेरी इफ यू नो ISDA, ISDA, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, इनके जो अग्रीमेंट्स होते हैं, आपने वो देखा होगा ना, मेरे ख्याल से एक मूवी है बिग शॉट. बिग शॉट देखा होगा ना, बिग शॉट, राइट? वो जो बंदा होता है दैट गाय जो अपना हेज फंड का फंड मैनेजर होता है, वो जाता है गोल्डमैन के पास, वो जाता है क्रेडिट स्विस के पास, डॉइचे के पास, और पता है इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लेता है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स. मेरे पास होगी घर में अभी कहीं. तो सिमिलर बुक्स होती है जहां पे आप पूरी ट्रेडिंग की जो गाथा होती है वो उसमें लिखी होती है, लाइक एवरीथिंग इज लाइक योर काइंड ऑफ अ ब्लड रिपोर्ट, लाइक तुम्हारा पूरा हेल्थ रिपोर्ट, कि भाई ये जो ट्रेड है, ये जो पर्टिकुलर डील है, इतना बड़ा उसका डॉक्यूमेंट. सो मिडिल ऑफिस वाला बच्चा लोग विल गो थ्रू दिस. दे चेक एवरीथिंग, कुछ एरर है क्या, कुछ पंगा है क्या, लफड़ा है क्या. सो दे डू. सो मिडिल ऑफिस जॉब इज ऑल अबाउट दिस. मिडिल ऑफिस में एक्चुअली कभी कभी वैल्यूएशन भी आता है. वैल्यूएशन का एक पार्ट आता है, दैट्स कॉल्ड एज आईपीवी, इंडिपेंडेंट प्राइस वेरिफिकेशन. तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इसका रीजन ये है बिकॉज ये जो जॉब्स है वो इंडिया में मिलती है. ऐसी बहुत सारी जॉब्स है जो इंडियन मार्केट में अभी तक आई भी नहीं है, जो यूएस और यूरोप मार्केट तक ही सीमित है. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इफ एट ऑल यू आर गोइंग आउट, राइट, फॉर एन इंटरव्यू, एंड रादर मेबी इफ यू आर रीडिंग समथिंग ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इफ यू सी आईपीवी, अरे हाँ सर ने एक बार बोला था इंडिपेंडेंट प्राइस वेरिफिकेशन, तो वहां पे सीएफए भी काम करता है, बीकॉम काम करता है, सीए भी काम करता है. And that's how I'm trying to tell you that you can get into investment bank. सर मैंने माना IIMs की बात करें, IITs के बारे में बात करें, मेरे जो काउंटर पार्ट्स थे, mostly my counterparts मतलब the guys who were there on the London desk and the US desk, I have seen them IIM, Wharton, Stanford, Harvard, right? So these are like big things, like if you have it, then you'll get it. If not, then will you be able to get into investment bank? The answer is absolutely yes. Middle office is something you can actually get into, और वहां पे काम बहुत तोड़ चलता है. See, I'll tell you, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, कि आपका जो जॉब होता है ना, वो एक्चुअली मोनोटोनस नहीं होगा. मतलब वही भाई चल रही है आपकी लाइफ, 15 लाख आपको मिल रहा है, 16 लाख मिल रहा है, आपने गाड़ी वाड़ी खरीद ली, आ रहे हैं अपने 6-7 महीना, बहुत मजा आता है लाइफ में, पार्टी वार्टी होती है, हर एक रिलेटिव बोलता है कि भैया आ जाओ हमारे घर पे खाना खाने को. आपके अगले 7-8 महीने के संडेज बुक हो जाएंगे. फिर उसके बाद जो लगती है ना लाइफ की, वो नहीं समझ में आता, बिकॉज सेम शिट, सेम पीसी, सेम बॉस, सेम ऑफिस, सेम बीचिंग, सेम पॉलिटिक्स, सेम वर्क, सेम ईमेल. तो मेरे ख्याल से आईबी में एक चीज ऐसी होती है कि अगर आपको वो टाइप की प्रोफाइल मिलती है जहां पे यू आर नॉट डूइंग मोनोटोनस वर्क, फिर तो भाई मतलब लाइफ बन गई आपकी, राइट? दूसरी चीज, ये जो प्रोफाइल्स होती है, ये आपको इंटरनेशनल लेवल का भी एक्सेस देती है. यू रिमेंबर मैंने कल बोला था, मेरा एक फ्रेंड था जो यहाँ पे सीएस में काम कर रहा था, फिर यहाँ से वो काम करके एक्सप्रेस करके नाउ ही इज इन लंदन, राइट? तो बात ये है कि जो काम यहाँ पे होता है इंडिया में, मिडिल ऑफिस एंड बैकएंड का,
वो दुनिया में भी होता है, एंड इंडियन टैलेंट इज मोर रिस्पेक्टेड ग्लोबली. डू यू अग्री? इफ यू अग्री पुट द कमेंट, राइट? मेरे को ऐसा लगता है इंडियन टैलेंट इज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब, एंड यस वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. तो यार यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर योरसेल्फ, यू कैन एक्चुअली माइग्रेट, यू कैन एक्चुअली गो फॉर ओन जॉब. मैंने कितने सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, उनके रिलेटिव्स भी मैंने देखे हैं, जहां पे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करा, दे स्टार्टेड वर्किंग विद मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस, अपना सीएफए करा, किसी ने सीपीए किया, उसके बाद वो चले गए सीधा बाहर. सो लाइक देयर आर पीपल दैट वांट टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूं और ये ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ये लगती है, जब मैं मिडिल ऑफिस और मैं बैक ऑफिस के बारे में बात करता हूं, यहां पे देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. क्यों? मैं आपको बताता हूं यार. जब इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं ना, इमेजिन गोल्डमैन सैक्स पेइंग 25 lakhs टू जमनालाल बजाज, राइट? 25 lakhs के बारे में अगर हम बात करेंगे, अ कंपनी लाइक गोल्डमैन सैक्स who's got $1 billion का कैश, 25 lakhs is nothing for them. Even if they take चार बच्चा, it's like 1 crore is like peanuts for them. You getting my point? The point here is that यहाँ पे मिडिल ऑफिस बैकेट में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. तो मैंने माना जेबी वाला, सिम्बी वाला एक पैकेज पे बैठेगा, बट लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम अ छोटा कॉलेज, राइट? एंड वंस यू गेट इनटू अ बी स्कूल एंड देन यू गेट इनटू अ लेट्स से कंपनी कॉल्ड एज मॉर्गन, जेपी मॉर्गन, आपकी शुरुआत होगी 10-12 से, दालमिया 22 में देता है, राइट? केजेफ में 18 का भी प्रोफाइल आता है इन्वेस्टमेंट बैंक का बैकएंड वाला. यू कैन स्टार्ट योर लाइफ, देन यू कैन डू सीएफए, then you can do some other programs like a professional qualification sort of thing, and then you can boost your career. You can actually get into more levels of the same organization, or you can shift yourself to some another company. तो यहाँ पे मैं उन बच्चों को बोलने वाला हूँ कि जिनको लगता है कि भाई मुझे फाइनेंस करना है और मैं छोटे कॉलेज में जाके सर्वाइव कैसे करूंगा, इन्वेस्टमेंट बैंक का यही सबसे अच्छा बात है. बीइंग इंटरनेशनल कंपनीज, दे रिस्पेक्ट टैलेंट. हमारे यहाँ पे कंपनी डिस्क्रिमिनेट करेगी कि भाई चल ना तू इस कॉलेज से है तो तू गधाई होगा, तू इस कॉलेज से तुम बहुत शाय हो, ऐसे नहीं होता. लाइक दीस गाइस दे लाइक मोर फकिंग प्रैक्टिकल. दे लाइक वी कैन फक विद व्हिच कॉलेज यू फ्रॉम, यू टेल अस कैन यू डू दिस थिंग्स, इफ यू कैन डू इट, यू गॉट अ नॉलेज, यू गॉट अ पर्सनालिटी, इन नो डाउट अबाउट इट. तो ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की, जो एक्चुअली ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो अभी फिलहाल इंडिया में है. मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने देखी है बच्चे जो दालमिया के सुमाय से निकल के आज वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं. और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम इन्वेस्टमेंट बैंक जैसा ही होता है, आप हर जगह जाओ. बट मान लो अगर आप किसी केपीओ में जाते हो, जैसे अगर हमने बात करी eClasses की, eServe की, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं होता. आई मीन आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हो, बट एक्चुअली आप करते नहीं हो, बिकॉज आपका क्लाइंट इन्वेस्टमेंट बैंक होता है. तो ये जो कैप्टिव वगैरह है ना, वो बहुत सही है. इसलिए अगर आप कोई अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो, सो my 3 students, those who have done CFAP, right? One is from IIM Calcutta, one is from JB, one is from Sidham. They all are working with investment banks. You getting my point? And they are actually working in middle office. So middle office में डील होता है, like डील जो restructuring होती है, तो डील स्ट्रक्चरिंग होती है, उस पे आप काम करते हो. You work on project finance, you work on lot of big things. So that's what happens in middle office, right? Then you have something called as backend. Backend में बहुत सारी प्रोफाइल है. Backend में accounting का भी प्रोफाइल आता है. I mean like ये पार्ट नहीं था, but I'll make a part. This is a part of this video. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई अकाउंटिंग मतलब बकवास है, ठीक है? अभी हमको एमबीए फाइनेंस करना है, हमें अकाउंटिंग नहीं करनी है. यार ये गलत बात है. अकाउंटिंग को मैंने देखा है लोग ज्यादा प्रमोट करते नहीं है, बट आपको पता है यूएस गैप, आईएफआरएस, ये जो चीजें हैं, ये आजकल आईबी के बैकएंड में भर के चल रही है. सिंपल सी बात है, मुझे बस इतना बताना है कि अगर आपको, आई हैव सीन पीपल बैकएंड में काम किया, एसआईटी पुणे से निकला, क्रेडिट स्विस में उठाया 14.5-15 लाख पे, आईबी का टैग लगा, एंड यू आर ऑन एक्चुअल आईबी का पेरोल. तो जो बच्चा गोल्डमैन सैक्स के, अगर मान लो कोई इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से है, अगर वो यूके में काम कर रहा है, अगर वो गोल्डमैन के पेरोल पे है, और अगर बॉम्बे का बच्चा अगर गोल्डमैन में काम करता है बैकएंड पे, तो वो भी गोल्डमैन के ही पेरोल पे. दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है सर, बोथ आर इक्वल. इट इज दैट वो फ्रंट में होगा, बैकएंड में होगा, इट डजंट रियली मैटर. तो अकाउंटिंग का जो काम है, आजकल अकाउंटिंग का जो प्रोफाइल है वो बहुत तगड़ा हो चुका है इन्वेस्टमेंट बैंक में. 2008 का क्राइसिस जो हुआ था, उसके बाद अकाउंटिंग इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी. पंगा ये होता है, हमको फाइनेंस पता है, हमको अकाउंटिंग ही नहीं आता.
बच्चे आज भी टेंशन में कि भाई डेबिट में आता है क्रेडिट में जाता है, सस्पेंस अकाउंट तो सबको पता है. सी द पॉइंट इज दैट these are the avenues that you have if you are getting into investment bank which are ready to pay you around about 15 लाख 16 लाख. हम बात करेंगे इक्विटी रिसर्च के बारे में. What is equity research? It's a normal thing that a finance guy should do. Financial modeling, financial analysis, जो हम CFA प्रोग्राम में कराते हैं, जो मेरा प्रोग्राम चलता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम, इसमें हम यही चीजें कराते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कराते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे कराते हैं. तो बच्चा जेबी से निकल के वो इक्विटी रिसर्च एनालिसिस कर रहा है, वहां पे वैल्यूएशन पे काम कर रहा है, उसको 25 से 30 लाख का प्रोफाइल मिल रहा है. द प्रोफाइल इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो अचीव. इट्स जस्ट दैट ही इज फ्रॉम जेबी, ही इज गॉट इट देयर. It doesn't mean that you will not be able to get there. If you have that kind of a skill set and you can build it, that's the best thing. ये ऐसी प्रोफाइल है जो आपके टैलेंट के ऊपर आपको मिलेगी. इमेजिन करो, if you are from IIM Ahmedabad or if you are from IIM Calcutta, Lucknow और जमनालाल बजाज. Let's just say if you are from जमनालाल बजाज, you're getting into McKinsey, right? McKinsey में भी आपको as an analyst ही मिलेगा. पहला आप किसी से भी जाके बात करो, आप जब McKinsey में चलते हो, McKinsey will not tell you आ जाओ भाई चलो अपना डील पे चलना है, we are going for a deal of Reliance Jio and we are going for Facebook का डील. नो नो ऐसा नहीं होता, ये सब बाद में होता है. पहला स्टार्ट होता है पेपर उठाने से. फाइल उठाओ, फाइल दो, सीखो, करो, समझो, ऑल दैट स्टफ. देखो आपको पता चलेगा, स्पीक टू पीपल दे टेल यू. तो हर जगह थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है. बट McKinsey में अगर वो बंदा गया कंसल्टिंग में, एक साल के बाद he is going to be big shot, no doubt about it, right? Because they pay you very well. But imagine if you are not making it to McKinsey at a first go from JB, then it is quite tough for you to kind of go there at that place. Because अगर मान ले 5-6 साल के बाद भी अगर तुझे जॉब मिलता है, you will not be able to go to that level जहां से वो बच्चा निकला है until unless you are from IIM. तो मान लो अगर आप यहाँ से छोटे कॉलेज से भी निकलते हो and if you upgrade your skill set, then you can reach out to those people, you can kind of surpass them. That's my words to you. Because ये जो इंडस्ट्री है ये रिस्पेक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी को. डेफिनेटली उसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस आता है, कम्युनिकेशन आता है, और जिसमें आता है हाउ टैलेंटेड यू आर, एकेडमिकली तुम कितने सही हो. तो एकेडमिक की जब बात मैंने पहले भी कहा था, कुछ बच्चे जो है जिनका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं लगता, they don't like algebra, trigono and all that. They don't like. by the way बहुत गाली पड़ती है ट्रिग्नो को, बहुत गाली पड़ती है पीएनसी प्रोबेबिलिटी को भाई, पर जब आप चलते हो आईबी में ये चीजें आपको करनी पड़ती है, पर वो फ्रंट एंड है, तो छोड़ दो. तो वैक्यूम के बारे में जब हम बात करेंगे, तो इवन दो यू आर नॉट फ्रॉम अ टॉप नॉच कॉलेज, आपने थोड़ा बहुत एड करा, सीएफए वगैरह कर लिया, आईएफआरएस कर लिया, सीपीए वगैरह कर लिया, यू कैन गो प्लेसेस. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, यू कैन go across the globe because accounting and finance is common everywhere. There are a couple of changes that will take place, but not on a very high scale. That's the reason IFR है. जिसको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. और ये कंटेंट आपको और शायद से नहीं मिलेगा. And this is my kind of my efforts कि जो हम ये सैटरडे 11:15 का जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ हर दिन, this is just to guys make you aware of, because when I was struggling to understand कि भाई IB होता क्या है, hedge fund होता क्या है, ये चीजें होती है. बिकॉज हमको क्या लगता है, बैंक में बच्चा गया, बैंक में बच्चे को जॉब लगी, मतलब गंगा नहा ली, मतलब हर हर गंगी, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो ऐसा लगता है बच्चों लोगों को कि भाई बैंक में क्या मतलब हो गया. सो कोई लगता था कि भाई बैंक में, तो बाद में पता चला ये कैसे बोलते हैं कि भाई खुद मरो बाद में स्वर्ग मिलेगा. तो दिस इज लाइक व्हाट आई हैव काइंड ऑफ फेस्ड, लाइक व्हेन यू एक्चुअली स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड व्हेन यू रिसर्च्ड अ लॉट, then you got to know कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज होती है. and I mean I'm not bragging, but I still remember when I was in Symbiosis, those days were really bad. I was struggling for it, but then for the fact I never had a mentor, I remember because you were like on your own, earn and learn. So whatever money that I used to get, whatever 10 rupees 15 rupees that we used to have, right, I had an option कि either you have your lunch or you spend it on cyber cafe. Now, why cyber cafe? Because I always wanted to do more research. फाइनेंस में क्या करना है, क्या क्या प्रोफाइल्स है. So फिर इतने बच्चे पुराने, मतलब तब तो इतना इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, तो पुराने जो साइबर कैफेज होते थे वहां पे जाने के बाद आपको आईडी देना पड़ता था. फिर अगर तुम साइबर कैफे देखो ना, ऐसे बंकर लगते थे, बंकर टाइप. एक ऐसा सिस्टम रखा है, फिर इसके बीच में वैसे कुछ शेड है, फिर इधर शेड है, तो दूसरे के सिस्टम पे क्या चल रहा है वो दिखेगा नहीं आपको. यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज़ यू हैव फन देयर. देन आई वुड गो देयर, आई काइंड ऑफ गूगल इट अप. अच्छा ये कॉलेज से ये प्रोफाइल, अच्छा ये प्रोफाइल. फिर वहां से वो समझा कि अच्छा यार ये आईडी करके होता है, ये बहुत फाड़ होता है. फिर सेकंड ईयर में मुझे वो सब्जेक्ट भी आया था.
Then I started getting more interest, and then that's how I went ahead. So this is my kind of छोटा सा attempt that you should know. अभी अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा था. अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू है, पर कौन सा इंडिया वाला नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग. इसलिए मैं बोलता हूँ सीपीए वगैरह, आई मीन थोड़े से हैं महंगे वो कोर्सेस, बट ऐसा नहीं कि आप वो कर नहीं सकते, कर सकते हो. तो अगर आप दालमिया केडी सोमा से भी निकलते हो, यू कैन डू इट वेरी वेल. जेपी मॉर्गन चेस की अगर मैं बात करूं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो जेपी मॉर्गन चेस का एवरेज पैकेज वुड बी 10 से 12 लाख. आराम से आपको बैक एंड वाली जॉब मिलेगी, मस्त आपका खुद का क्यूबिकल होगा, आपके नेम की प्लेट होगी वहां पे, बाइज्जत बकायदा आपको काम करना है, हॉट शॉट प्रोफाइल होगी आपकी, पीपल विल बी लाइक ऑसम अराउंड, एंड यू विल बी स्लॉगिंग अराउंड अबाउट 12-13 आवर्स, बट इवेंचुअली यू विल ग्रो अ लॉट. समझा? So this is what your investment banking is doing to you, and this is the reason, you know, why I sort of, you know, like this profile, because यहाँ पे you can grow on your talent. You don't have to have that brand. After some period of time, you kind of, you know, ignore that brand. But हाँ, front end में brand का बहुत जरूरत है. Middle office में और back end में brand का इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है. वहाँ पे आप अपने दम पे ये job ले सकते हो. I mean, trust me, if you're starting with your investment banking का profile, अगर आप back end में भी चलते हो ना investment banking में, with first salary you can definitely book a car. I mean, you can afford a car. I mean, that's how you will get paid eventually. एक दूसरी अच्छी बात होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, जो मुझे अच्छी लगती है, when they give you package ना, जब आपका सिटी से आता है आपके हाथ में, जब बोलते हैं आपको 20 लाख 25 लाख 30 लाख की जब सैलरी होती है, that's your CTC, which does not include your bonus, and they give you good bonus, 5 lakh 6 lakh 7 lakh 2 lakh 3 lakh, and if you're a good performer you might earn more than that, and if you have a good profile you might make it more than that. You get my point? And stay there for like what, like 12-13 years, you'll become what, like director or MD, whatever. So if you look at, अगर आपको US के बारे में जानना है, I tell you, 2007 में अगर आप वॉल स्ट्रीट पे देखोगे, हाईली पेड ट्रेडर, हाईली पेड ट्रेडर, वो ना गोल्डमैन था, वो ना मॉर्गन था, कोई था, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बैंक था, उसको बोलते हैं बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक. वो बंदा, I think he made $2.5 billion as a bonus. And likewise, मतलब 2005, 6, 7 was a golden years, people call it as, you know, these were the golden years in USA. So they make a lot of money. So you can shift from India to US, Europe, wherever you want to shift. You can do that. Fine. Now, boutique investment bank. अब boutique investment bank एक नया concept है मार्केट में, जो पिछले 6-7 साल से आ रहा है, और वो तगड़ा है. boutique investment bank जहाँ पे ना ये गोल्डमैन, डॉइचे वगैरह इतने बड़े नहीं होते, ये छोटे-छोटे होते हैं. I remember during my days in IMA, I did a project with one of the boutique investment bank, जहाँ पे we had a chance to actually represent one of the company from Spain. It was a Spanish company. They were doing something to do with the glass. And we interacted with Lockheed Martin. If you know Lockheed Martin, it's the #1 company of USA. It's the right hand, जो पूरा defense का चीज बनाता है. So we were on a call with the top management wherein we were talking about accounting and IFRS and valuation. It is lifetime experience. So even though boutique investment bank can give you that kind of a chance to actually kind of take your career to that level, तो आप बड़े बैंकिंग में चलो चलेगा, आप boutique investment बैंक में चलो चलेगा. If you want to get into Indian investment bank, you need IM tag or you need JB वाला tag, right? जहाँ पे आपको debt restructuring वगैरह के बारे में बोला जाएगा. तो guys ये सारी प्रोफाइल आपको investment banks में मिल सकती है. Now next lecture when I'll take with you, तब मैं बात करूँगा कि how do you kind of get into it. What sort of things are required? What sort of skill sets are required? But again, you don't have to be an Einstein. You can do CFA, FRM with a छोटा सा सर्टिफिकेट है, like CFAP, जहाँ पे हम इतना प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहे हैं. It can still open doors to you for your middle office and back office. Along with your MBA, if you have this kind of a talent set, because ये चीजें वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा, बता डेरिवेटिव क्या है, बता फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है. और what we do during this program is basically we teach you something which is very much on a practical level, not something which is घिसा पीटा वही bookish knowledge and all that, because these guys will not appreciate that. They want real stuff. So when you tell them this is the interview, they don't even look at your academics, they don't even look at where you come from. You know it, you can do it, simple, most welcome, as simple as that. You getting my point? But हाँ, अकैड्स का भी बात किया इसलिए मुझे ध्यान में आया, जब हम बात करते हैं IIM ABC और KIL FMS वगैरह के एक्सपीरियंस के बारे में, टॉप नॉच फ्रंट एंड वाले जॉब में वहां पे एकेडमिक्स देखा जाता है, उसका bare minimum cut off, like it should be like 90 plus and gold medalist and blah 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 blah. But यार उसकी प्रोफाइल भी तो उतनी हाई होती है, उतनी तोफ होती है. तो if you're an IITian or maybe if you're from SRCC, IITians or maybe NITians or maybe SRCC folks or SIMB folks are watching this video, definitely you guys are always there with a good academics.
you can actually definitely make it to it. So it's like clear cut कि भाई IIT IIM है तो ही आ जाओ, या फिर CA वगैरह रैंक गोल्ड मेडलिस्ट something like that, then you will be able to get into front end. So getting into front end is quite tough compared to back end and the middle office. I hope it's clear now. Fine. ठीक है. So I'll take your questions now. थोड़ा बहुत ज़्यादा बाउंस हो गया होगा, पर जो भी मैंने बताया आपको वो रियलिस्टिक था, एंड जो भी बताया वो अच्छी वाली बात थी. बाकी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है आपको क्या क्या जानना है. I will not say that, guys. Of course, doesn't look good as a mentor. Fine. Now let's take your question. जो भी आपके क्वेश्चन है वो लेते हैं. I am against sweating like anything. चलो guys. How to prepare for GK? कृति अग्रवाल wrong question. GK बारे में बाद में बात करेंगे. Okay. How is tackling for finance? Decent है. NIBM versus KJ. Sir, I'm a fresher with CA first, no CA. Can I get opportunity to work as a banker for multinational banks? अगर आप सिम्बी बैंगलोर में CS आता है, मॉर्गन आता है, अगर आपका एकेडमिक अगर आपने अच्छा रखा है, MBA के पहले साल में अगर एकेडमिक अच्छा रखा, कंसेप्चुअल नॉलेज अगर अच्छा रखा, टेक्निकल्स अगर आपको आते हैं, और अगर वो कंपनी कैंपस पे आई, then nobody can stop you from getting into investment bank. एक बार तुम बैक एंड में गए, फिर फ्रंट एंड और फिर मिडिल ऑफिस से फ्रंट एंड में आप जा सकते हो बिंदास. What should an engineer do during MBA to get IB profile and new IMR मिलेगा? अच्छा, for engineers guys, right? For engineers, if you are getting into a good sort of a B school, then you might get it. But even if you get into a college like Sidnam or let's say Nasimonji or KGSOM for that matter, if you keep that hold on your finance, मैंने कल यही बोला था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई मतलब करना तो है तुमको इन्वेस्टमेंट बैंक, तुमको जाना तो है इन्वेस्टमेंट बैंक में, तुमको 7 फिगर का सैलरी चाहिए, पर एमबीए में हमें क्या करना है, पार्टी शार्टी, हमको वो इवेंट करने हैं. बट अगर वो तुम स्किप करे, अगर तुमने वो स्किप करा, ऑल दिस जो इररिलेवेंट चीजें अगर स्किप करी, और अगर फाइनेंस की बुक्स लेके पढ़ना चालू किया, बिकॉज सिंपल सी बात है, मार्केटिंग में तुम बोल बच्चन दे सकते हो, फाइनेंस में बोल बच्चन नहीं चलेगा, पर उसके साथ टेक्निकल भी आना चाहिए. वैल्यूएशन कैसे करते हैं किसी भी डेरिवेटिव का, तुम ज्ञान नहीं दे सकते वहां पे, यू गॉट टू फकिंग प्रूव इट आउट, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, और यही बहुत बड़ी दिक्कत होती है फाइनेंस में. पढ़ नहीं पाते तो फाइनेंस ले नहीं पाते. सॉरी आई एम बीइंग लिटिल बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट हाँ ये है यार, एक चीज है यार. सीए देखो कितना रगड़ते हैं बेचारे, सीए देखो 6-6 7-7 साल. मेरा एक स्टूडेंट है, और मेरा एक फ्रेंड है, सिम्बिक में था, वो मुझे बोला भाई मेरे को 1 साल ना एक कमरे में बंद कर दो और उसको ना ताला लगा के उसकी चाबी लेके जाओ, तभी जाके मेरा सीए निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा. तो इतना डेडिकेशन होता है यार. तो अगर इंजीनियर हो या फिर बीकॉम वाले को भी मैं बोल रहा हूँ, एमबीए में जाके यू विल हैव टू स्टडी. once you get the technical thing, and once you get in there in IB, then you will party every single day. Simple. Then you will party every single day. And if you are from top notch college, IIM ABC, if you are an IIT and SRCC and all that, if you are inherently talented, then you can do it. जो बाकी का पब्लिक 10 घंटे में करेगा, तुम 2 घंटे में कर लेगा. ऐसे बच्चे होते हैं यार, आपका IQ अच्छा है, then you can have fun also and then you can study also. But if you are not that sort of a student, you got to slog it as simple as that. ठीक है. I'll give you a scenario. 2007 में और 2008 की बिगनिंग में एक डॉक्यूमेंट्री है, कभी देख लेना. वो चीजें मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, नॉट दैट डिसेंट, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा. बट यू नो व्हाट, अगर मान लो कोई चीज $1 की मिलती है, अगर मान लो कोई चीज यूएस में $1 की मिलती है, investment bankers were making so much of money that they were ready to pay around about $1,000 for that $1 thing. So that $1 commodity actually meant to become $1,000 commodity. Huge money. But you need to work hard, you need to slog. You can't moan about it. So being very much straightforward, yeah. I mean, मेहनत करोगे तो फिर sorted. इसलिए people say that 40 तक काम करो then retire. Front end, back end में नहीं, back end में चलता है. ठीक है. Fine. What else we have? CFP or CFA before getting into JBMS. अच्छा. To be very honest, I'm not exaggerating, not even bragging. Do CFA. CFA तुम्हारा बहुत सही जाएगा. अगर आपने मेरे एक स्टूडेंट का ये देखा होगा वीडियो, उसका नाम है प्रत्युष क्रैक, he's cracked KGSOM and he's cracked IMT गाजियाबाद. Very sure XLR भी कर लेगा. So प्रत्युष is a CA guy. उसने CA किया, CA करने के बाद CFA किया, और CFA में उसको he said even after being CA,
So many things I learned during CFP program. And now for the fact he is studying for CFA because admission a bit differ हो गए. So for the fact he is studying for CFA, he is actually doing it very well because he is like मेरे concepts clear हो चुके हैं. So he is that is Pratyush. There is one more student who is from Signum. उसने बोला कि सर मैं and he was an engineer मतलब he is an engineer. He joined me in Pune class from last year. उसने बोला कि यार एज एन इंजीनियर इतना मतलब फाइनेंस का एफ भी नहीं पता था बट मुझे सीएफएपी कांसेप्ट्स इतने क्लियर हो गए जो प्रोफाइल उसको चाहिए थी फाइनेंस की ये गॉट दैट प्रोफाइल फॉर समर्स एंड फॉर द फैक्ट मेरे स्टूडेंट्स भी है यू नो सिडनम में तो मैंने उनको कहा था कि यार मेरा सीएफएपी करके भी एक प्रोग्राम चलता है आपने वो करा है क्या तो मैंने उनका रेफरेंस दिया था पता है कि ये बंदा इस बंदे ने मेरे साथ पुणे में करा था सीएफएपी तो बोलता है अच्छा वो बंदा हाँ वो हमको पता है हमको भी फाइनेंस वही पढ़ाता है. So that's how it is, you know, you're getting my point, right? So that's how it works. So yeah, if you want to do it, you can do it. Mercurial, Bitcoin. Why do you want to talk about that, buddy? Okay, fine. Sir, backend में accounting के लिए certifications. यार कोई certifications नहीं होता. CFA is a good certification मेरे ख्याल से. And आपका college. एक बारी college में चलो, थोड़ा बहुत आप हाथ पैर मारो, concepts अच्छे से करो, एक बारी backend में लग जाओ, credit Suisse, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन जहां पे भी आपको लगते हैं गोल्डमैन इधर भी आता है एसआई में पुणे में भी आता है गोल्डमैन एनएम में भी आता है एंड दे गिव बैकएंड वाला प्रोफाइल नो डाउट अबाउट दैट राइट तो एक बार वहां पे आपने चल लिया ना फिर वहां से आप निकल सकते हो आगे. अब मैं क्या करूंगा सेकंड वाला जो मेरा लेक्चर होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का उसमें मैं आपको हर एक प्रोफाइल का डिटेल बताऊंगा कि भाई इंडिया में ये प्रोफाइल विल नॉट टॉक अबाउट यूएस और एनी ग्लोबल मार्केट्स विल टॉक अबाउट इंडियन प्रोफाइल कि इंडिया में ये प्रोफाइल है ये स्किल सेट है ये कॉलेजेस है ये सर्टिफिकेशन है सो दैट इट मेक योर लाइफ लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ भाई मुझे ये करना है मुझे अगर यहाँ पे चलना है तो फाइन ठीक है कूल डू यू हैव एनी अदर डाउट्स गाइस द इन्फो यू आर प्रोवाइडिंग इज डैम टू वैल्यूएबल आई प्रॉमिस टू पे फॉर इट समडे थैंक्स अ लॉट सर थैंक यू सो मच बड़ी मैं सुपर चैट वगैरह ऑन जानबूझ के नहीं करता डजंट लुक गुड आई एम योर मेंटर आई शुड बी गिविंग यू ऑल दिस थिंग्स एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट तूने बोल दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड ऑफ गेस्चर बड़ी हाउ मच max PMP experience is generally considered by investment banks while hiring from B school हर जी ओके तो बड़ी अगर आपका वर्क एक्स रेलिवेंट है 100% वो काउंट होता है मैंने इसलिए कहा दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉलेज यू नो दिस बैंक्स और दिस यू नो कंपनीज दैट दे कंसीडर एवरीथिंग दैट यू हैव डन राइट फ्रॉम द सर्टिफिकेट तो बोले एक ये नहीं बोलेगा अच्छा ये सर्टिफिकेट तो हमको पता नहीं कहां से वो पूछेगा कि भाई बताइए सर्टिफिकेट में क्या है अगर सिंपल सी बात है मैंने जब आईएम्स से हायरिंग करी थी इंटर्नशिप के लिए या फिर जब मैं गेस्ट लेक्चर बन के भी जाता हूं एज अ गेस्ट लेक्चर जब मैं जाता हूं मैं बच्चों को सिंपल पूछता हूं पता कि भाई कमर्शियल बैंक में और इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या फर्क है वही टिपिकल घिसे-पिटे आंसर आते हैं जो मैंने पहले बोले थे बच्चों को अभी तक नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी डिपॉजिट लेना चालू करा है 2013 से 2014 से मैंने एक वीडियो बनाई है गोल्डमैन सैक्स की जाके देख लेना डाल देना गोल्डमैन सैक्स वहां पे आपको आ जाएगा आई हैव मेड दैट वीडियो लेकिन तुम्हें इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहां पे मैंने बच्चों को दिखाया है so you know if you are studying something which is more practical they'll appreciate that and they'll give you a job that's for sure all right cool is it worth to join placement committee for getting the job in advance Tanumay Mukherjee dada Tanumay Mukherjee नहीं इट इज नॉट ट्रू कि प्लेसमेंट कमेटी ज्वाइन करा तो भाई आपको जॉब मिलेगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता प्लेसमेंट कमेटी पता है बच्चे को ज्वाइन करते हैं 100 बात की एक बात सर हवा करनी है कॉलेज में रोब जमाना है और थोड़ा यू नो शो शाइनिंग करनी है ये प्लेसमेंट कमेटी का काम होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट और जिसको हाँ लर्निंग भी होती है बहुत अच्छा लर्निंग भी होता है एचआर से बात करने को मिलता है टॉप नॉच कंपनीज के साथ काम करने को मिलता है 10 में से ऐसा 2-3 बच्चा होगा 7-8 बच्चा जाता है वहां पे पावर के लिए शो ऑफ के लिए बट ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट कंपनी को पहली प्लेसमेंट के कमेटी के बच्चों को जॉब मिलती है कितने सारे में आपको कॉलेजेस दिखाओ जहां पे प्लेसमेंट कमेटी वाले अनप्लेस्ड हैं चमका तो प्लेसमेंट कमेटी ऐसा नहीं कि आप गए तो आपको जॉब मिलेगा ऐसा नहीं होता हाँ थोड़ी आपकी वट होती है कॉलेज में थोड़ा आपको भाव ज्यादा मिलता है पर यार वो बेचारे भी एक्चुअली उनका स्टोरी अलग होता है वो पढ़ाई भी करते हैं कॉलेज का काम भी करते हैं बाहर भी घूमते हैं बिकॉज उनको कंपनीज में जाके पिच करना होता है वो बहुत सारा उनके माथे पे होता है तो दे स्ट्रगल अ लॉट यार बट अगेन मेरे ख्याल से मुझे बच्चों ने बोला कि आप ये वीडियोस बनाओ बट यार ये वीडियोस बनाने से वेस्ट ऑफ टाइम प्लेसमेंट कमेटी में क्या हो रहा है किधर क्या हो रहा है ये तो आपका कोई भी फ्रेंड जो एमबीए करता है छोटे कॉलेज में हो या बड़े कॉलेज में हो वो आपको बता देगा बिकॉज प्लेसमेंट कमेटी इज अ कांसेप्ट दैट वर्क्स इन एवरी कॉलेज तो दालमिया में कुछ अलग हो रहा है आईएमबीसी में कुछ अलग हो रहा है ऐसा नहीं होता
सब जगह सेम है, कहानी घर घर की, इट्स द सेम थिंग. दैट इज द रीजन आई डोंट मेक वीडियोस ऑन दिस सॉर्ट ऑफ टॉपिक. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. Okay, what else we have? Can engineers do CPA or CMA or CFA? Yeah, you can do it. You can do it. Yeah, CPA. चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट का थोड़ा पंगा होगा, बिकॉज चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट में कैसा होता है ना कि अगर आप बीकॉम हो तो आपको 90 का क्रेडिट मिलता है, 150 का क्रेडिट लगता है आपको फॉर टू थिंग्स. वन, टू अपीयर फॉर द सर्टिफिकेशन एंड टू गेट अ लाइसेंस टू वर्क इन यूएसए और लाइक ग्लोबल. तो 90 आपको वहां पे मिलता है. तो मैं ऑलवेज बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप इंजीनियर हो देन यू डू वन छोटा सा काइंड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन व्हिच इज एमकॉम, तब जाके आपको कुछ मिलेगा ना. दूसरी बात होता कैसे है, अगर आप इंजीनियर भी हो देन आल्सो यू गेट सर्टेन क्रेडिट्स एक्चुअली, राइट. तो उसके बाद अगर आप एमबीए करते हो देन यू आर गेटिंग अराउंड अबाउट 120 का क्रेडिट व्हिच इज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू एक्चुअली अपीयर फॉर सीपीए. तो यस, इंजीनियर्स कैन आल्सो गो फॉर इट. सीएफए तो आप कभी भी कर सकते हो. मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज सीएफए लेवल 1, ही इज डन विद इट. ही इज गॉट 95 परसेंटाइल इन कैट दिस ईयर. वो रिपीट करेगा अभी बिकॉज ही वांट्स टू गो फॉर लेवल 2 और उसको और कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाना है. प्लेन इंजीनियर है वो, और इंजीनियर करते हैं सीएफए और क्रैक भी कर लेते हैं, मतलब दिमाग है, कर लेते हैं. डू पास एकेडमिक्स अफेक्ट ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी बैंक प्लेसमेंट्स in top big school? Yeah, it is top 10 top 15. फ्रंट एंड वाली जॉब आती है, एकेडमिक मैटर करता है. बैक एंड में, मिडिल ऑफिस में इतना एकेडमिक मैटर नहीं करता. इसलिए मैं कहता हूं ये चांस है, ग्रैब इट, मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, वर्क हार्ड, पढ़ाई करो, मेहनत करो, मिल जाएगा. एक बार मिल गया ना, सिंपल सी बात है. ऑलवेज टेल पीपल कि भाई तू अभी मजे मार, अभी ऐश कर, तू रगड़ेगा 40-50 साल, पक्का रगड़ेगा. तू अभी रगड़, अभी मेहनत कर. लाइक पीपल आर फकिंग पार्टिंग, यू स्टडी. They are going out, they are boozing, you study. They are having fun, you study. फिर उल्टा होगा, they are studying and you are partying, you are boozing. Simple. Fine. All right. ठीक है, that's it from my side. Yeah, CFAP is very well recognized during the summers of all the colleges. Definitely. Okay, fine. So guys, that's it from my side. अगर किसी का question unanswered सीएफएपी रिकॉग्नाइज करते हैं प्लेसमेंट के टाइम? यस इंडीड करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं. जो भी पढ़ाया है अगर वो सही से करोगे आपको डिफरेंस डे 1 पे पता चलेगा. यू डू दैट सर्टिफिकेट एंड यू हिट योर बी स्कूल, डे 1 यू विल गेट टू नो कि हां यू नो समथिंग रियली बेटर देन अदर्स. दैट्स माय गारंटी. ऑलराइट गाइस, फेयर इनफ. थैंक यू सो मच. वन सेकंड, निखिल पवार. ओके, ये केतन कैन टॉक अबाउट एसेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल एडवाइजरी रूल्स. निखिल कर सकते हैं, बड़ी नॉट अ प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, ठीक है. Okay guys, that's it from my side. Thank you so much for joining me for this live session. And if I have not answered your question, might have missed, I'm so sorry for that. Put the comment on the video once it's published. I shall reply by myself. So guys, that's it from my side. Thank you so much. Have a good night. Thank you.